Assalamu alaikum. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are, depending upon when you are watching this video. Right now, we are live. We are going to discuss a very latest new coin that is being launched right now. It is available, obviously, um, on a launch pad where you can buy it. I'll show you how to buy that before it launched actually to the public, and we'll discuss that coin plus ADAX. We'll discuss again today in detail, and a lot of information on these couple of coins, Cardano based coins. Cardano's looking really strong right now, and going into 2022, this is going to be huge, and these projects built on Cardano is going to be huge, especially these couple of projects that we are going to discuss today. Do not miss it. This live stream will be in Urdu and English. I will do this in English first, and then I'll switch over in Urdu, just like this introduction. So माय उर्दू लिसनर्स, आप लोगों के लिए एक नया कॉइन लेके आया हूँ जो कभी लॉन्च पैड पे है अगले 2 घंटे तक फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स. इट इज़ ऑन लॉन्च पैड बिफोर इट गोज़ टू द पब्लिक. सो आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और कहाँ से बाय कर सकते हैं आई विल शेयर विद यू. और ADAX के बारे में बात करेंगे. बहुत ज़्यादा जैम पैक लाइव स्ट्रीम है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. आइंदा आने वाले दिनों में कार्डानो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. तो प्लीज़ साथ रहिएगा. इंग्लिश उर्दू दोनों में है लाइव स्ट्रीम. तो पहले मैं जो है इसको उर्दू इंग्लिश में कंप्लीट करूँगा, सॉरी, और उसके बाद उर्दू में जैसे कि इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, इंग्लिश और उर्दू दोनों में. तो स्टे ट्यून. लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन कमिंग ऑन टू योर वे. Alright, so first of all, my English listeners, welcome again. If you look at Bitcoin and the markets right now, crypto markets, they are, before we go into our two coins that we are going to discuss, I'll just do a quick market review and a chart. We'll look at the charts. We are looking at Bitcoin 4-hour charts right now. And at this moment and this point, Bitcoin is sitting really nicely above $50,000. It touches, actually this morning it touched $52,000, and then came right back under $51,000. So 1,000 retracement, I would say. The very key level for Bitcoin right now, as we can discuss again and again, this area was built. This 53,600 area was built. This line was built going back for the whole year and beyond, and it's a very strong resistance and support line. So I'm assuming that if Bitcoin able to break this resistance of 53,600 and goes beyond that, it won't stop until it reaches to all-time high. So this is very strong resistance right now, and it is trading under that resistance for quite long. It went down. We can see that this big wick, it came down in the beginning of December, at the very time when everybody was looking into that Bitcoin will jump up very high in December, and December could be the month when Bitcoin could even cross a six figure. But what we have noticed, that it went right back below this resistance, this support line. This support was broken early December, and it is trading below that. And now, right now, you can see that U-shaped recovery we are in right now, and we are making higher highs and higher lows. So it's a good sign that it's making a U-shaped recovery, but it doesn't mean that it cannot go back down, because I mentioned earlier that right now the volume is very low. If you look at the bottom, the volume is very low, so the price action can go up and down very quickly. Any whale who has some leverage
can bring the price down very soon, very quickly, and same thing, it can brought the prices up very soon. Right now, it is sitting at a 20-day simple moving average, which is the a very a middle line. You can see that orange middle line of 20-day simple moving average of these Bollinger Bands. So you can see that it is sitting right above that, so it's a bullish sign basically. But last few hours I've seen some weakness in that it tried to break out this Bollinger Band upper line. It did, but then wicked back out. Kind of shooting star it formed. So it's not a good sign actually. It shows that the bears are still strong and not letting things go out of their hands. As a MACD also, we see that it crosses to green and then it crosses back to red, so very quickly. So right now the price action is very thin, and very margin of error is very thin. I mean, this could be a bull flag also, it is forming a bull flag, and then it can go right back up very quickly. And we can see that around this area there is not much resistance. If we look at VPVR, we are up on the hill actually, and going towards the upside. But if it breaks down again to that $48,000 mark, which is this red line, then we have a huge area at the back where it can roll back right back in these hills and go back $46,000 range. So it's a decisive moment, kind of decisive moment. We are sitting very nicely right now, I would say above $50,000 mark, but it can go either way. So trading is not as simple, or you cannot predict anything on this. This is a quick TA on Bitcoin, and similar situations we are facing on other coins as well, all the Bitcoins. Although as you can see that we are in a bullish territory for RSI, above 50% mark, 57 RSI we are looking at, and it's making higher highs again, just like the price action. We are having a big green dot on the momentum wave, and we are still running into that. But again, if you pay close attention of the momentum wave here, it's getting thinner, so it can go right back down. So that's my take on it, that maybe next couple of days, or one day maybe, or today, we see price action going down and then bounce right back up towards the end of the year. End of the year, fireworks might happen and it can blow up top. Still, there's a chance. So that's what it is. I will switch back in Urdu for a small translation what I've said in English for this TA, and then we'll go right back into our latest discovery of the coins. So मैं उर्दू ऑडियंस के लिए थोड़ा सा TA में करते चलूँ, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही, ऑल्दो ग्रीन है, काफ़ी गेंस हैं इस वक्त मार्केट में, काफ़ी चीज़ें ग्रीन टेरिटरी के अंदर हैं, काफ़ी बड़े कॉइन्स जो हैं वो ग्रीन टेरिटरी में, लेकिन स्टिल आई वुड से कि इस वक्त बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत लो है। और जब मैंने प्रेडिक्ट किया था शुरू में, अगर आप मेरी वीडियोस देखें ये हॉलीडेज़ शुरू होने से पहले, तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम लो रहेगा, इसमें ज़्यादा लोग वेकेशंस मना रहे होते हैं आखिर के 2 हफ्तों में, दिसंबर में, तो वॉल्यूम लो रहेगा, जिसकी वजह से जो वेल्स हैं उनको एक एडवांटेज होता है कि वो प्राइस को जैकअप कर सकें, अप एंड डाउन कर सकें थोड़े से पैसों से ही। थोड़ा सा सेलिंग करें, थोड़ा सा बाइंग करें, तो उससे प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं, वो लोग मैनिपुलेशन काफ़ी हो सकती हैं प्राइस में। तो वॉचफुल रहें, बिल्कुल भी ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जो आप देख सकते हैं जो प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अप एंड डाउन हो जाते हैं 10 ईयर में। लेकिन एक बहुत ही थिन एक टनल है, उसके रेंज है, उसके अंदर प्राइस एक्शन चल रहा है। दिसंबर के शुरू से जो नीचे आया है, इसने अपनी ये रेजिस्टेंस जो थी, ये उस वक्त की सपोर्ट थी, उसको तोड़ा है, 53,600 की सपोर्ट को तोड़ा है इसने और नीचे आया है बिटकॉइन। उसके बाद से मुसलसल नीचे ही चल रहा है। ये एक बुल फ्लैग हो सकता है, एक बहुत बड़े लैग अप के लिए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़े चांस है कि दिसंबर में जिस तरह से एक्यूमुलेशन हुई है सारी, ये एक बहुत बड़ा बुल फ्लैग है, जो कि अप साइड एक बड़ी लैग अप के लिए हो सकता है।
ये नीचे मज़ीद आ सकता है, यस आ सकता है नीचे, जैसे कि हम VPVR के जो जिस हिल पे जिस साइड पे बैठे हैं वो उस साइड बैठे हैं, नॉर्थ साइड पे बैठे हैं, जो मज़ीद नॉर्थ जा सकता है, मज़ीद ऊपर की तरफ यहाँ रोल आउट कर सकता है। और अपने जो इस वक्त जो रेजिस्टेंस शो कर रही है इस वक्त, जो कि पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस ये लाइन है, इसको क्रॉस करके इसके ऊपर अगर आ जाता है तो फिर ऊपर ये बहुत तेज़ी के साथ ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो हम न्यू ईयर के एंड तक जो है एक फायरवर्क्स देख सकते हैं इस तरह का, एक बहुत क्विक अपसाइड डाउन इसका हो सकता है। ऑल्दो के इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैकडी जो है वो भी ग्रीन टर्न हुआ बहुत हल्का सा, बहुत लो वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर दोबारा से रेड की टेरिटरी में भी जा रहा है। तो RSI जो है वो बुलिश टेरिटरी के अंदर है, ऊपर है 50 से, और ग्रीन डॉट्स के साथ जो है मोमेंटम में भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑल्दो के थोड़ा सा इसकी चोंच बनना शुरू हुई है यहाँ पर, जो मोमेंटम वेव है या वाइट वाली लाइन जो है ये पतली होना शुरू हो जाएगी, जो कि शो करती है कि वीकनेस और वापस नीचे की तरफ या किसी वक्त ग्रीन डॉट आके नीचे की तरफ आ सकता है। ये इस वक्त प्राइस चल रहे हैं बिटकॉइन के, और बाकी मार्केट्स भी इसी तरह से चल रही हैं। अब हम क्विकली जाएंगे अपने जो आज का जो टॉपिक है, जो 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 मेरी टैग लाइन भी है इस वीडियो की, उसकी तरफ जाएंगे हम, क्योंकि मैं ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता। कार्डानो को और ADX को हम बाद में देखेंगे इस वीडियो में टुवर्ड्स द एंड, लेकिन इस वक्त जो है हम वो कॉइन डिस्कस कर लें जल्दी से, क्योंकि टाइम सेंसिटिव मैटर भी है वो। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। Okay, so my English audience is strap yourself for the ride. So this is Doex. Doex. Let me show you their website. This is AMM-based decentralized exchange for assets that are native to the Cardano blockchain. Very simple, very easy. Everybody knows what it is. What is by now decentralized exchanges like Uniswap. That is for Ethereum. PancakeSwap is for Binance Chain. So we know we are very familiar with these decentralized exchanges, or we call it DEXs, um, on different chains. For Cardano, since it has activated their blockchain, I mean their smart contract features now. So the race is on. The race is on. We saw this month that SundaySwap, which is again a Cardano DEX system, came live, and but it has some issues. That SundaySwap has some issues of congestion, and there was some issues with the parallel transactions and stuff like that. There was quite some problems with their initial launch for SundaySwap. So it was kind of a setback for Cardano as a whole. That SundaySwap. Then I just came on yesterday on from my vacation and do a quick video on ADAX, because there was some news that ADX is making a big strides in January 2022, because that is ADX is the only next DEX that people are looking at, and they are actually in that video that I showed you yesterday from their CEO. He's claiming that he has resolved all those issues, which he didn't name SundaySwap, but he said our competitor. So clearly it was SundaySwap. He was mentioning their issues that they are having, but he mentioned that he has resolved those issues, and now we are launching and multiple things that I'm going to introduce you also later towards the end of this live stream, what they are saying. But they are the only DAX, ADAX after SundaySwap kind of failure, I would say, but there will be some more good times ahead for them. So there was no other choice. But now this is another kid in town. This is Doex. Doex is in early phases right now. It is available on the launch pad of X markets, where the ADAX also available.
Right now you can go to their website do.exchange and you can click on participate. Now there's only 2 hours left. You can see that you can click on participate and it will take you right into the page where you can buy it. It is available at 15 cent per coin right now. You can buy this using transferring your Bitcoin into e-markets, X markets exchange, and then from there you can buy it. So there is a little bit learning curve how to use this exchange. It's a new exchange. I was using it only to buy ADAX, and I made a video about it, how to transfer funds in that exchange and how to use this exchange previously in my videos. So you can go back and see those videos if you want to learn about this exchange. But then right now if you buy this, although you'll pay 15 cent, is as I said, is not launched in the market yet. It is a pre-sale is going on right now, and only 2 hours left for that. And you can see that ends in 2 hours. So you can buy that for 15 cent per coin, and then later on it will be listed on the exchanges and especially in X markets as well. And then if it goes up, you can earn big time. This is as I introduced, it is another choice for the people on Cardano to have another DEX systems. Very nice concept, very nice big team behind it. Um um Nicely done website, actually. I would say very educated. If you go through, you'll find a lot of their information, how they are planning to distribute their tokens, how evenly distributed on different phases, their roadmap. You can see. Um, so the team, it's not like somebody is working from their garage. It has a big team, big partnerships, press releases, a lot of coverage in the media. Their all their social links are active. I've checked their Twitter. They are currently updating their Twitter. Countdown is there for you can see that their IEO. They're counting down that 4 hour left. Right now it's only 2 hours left. Um, so it is updating quite frequently. Um, so that's it, my friends. I think you can do your own research on this project. It's very nice concept. It's still very new, early stages. I would say without putting too much at risk. If you can buy some and see how things roll out, it can be a good investment, good opportunity for you. ओके सो नाउ फॉर उर्दू ऑडियंस, ये कॉइन है आज का डू एक्स, जो कि कार्डानो का एक और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है. हमें पता है संडे स्वैप भी लॉन्च हुआ है इस महीने. वो थोड़ा सा उसमें ग्लिचेस आए हैं उसके लॉन्च पे, जिसको जो ADAX जो दूसरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है कार्डानो का, वो जो है उसको क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वो रिजॉल्व कर लिए हैं इशूज़ अपने, और वो उसको अपने सिस्टम में लॉन्च करने जा रहे हैं जनवरी के एंड में वो लॉन्च करने जा रहे हैं अपना मेन नेट, और टेस्ट नेट जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में. जबकि एक और जो प्रोजेक्ट है ये डूएक्स, ये भी एक AMM बेस्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है. जो एसेट्स, जो भी कार्डानो के एसेट्स जो हैं वो उस पर लिस्ट होंगे इस ब्लॉकचेन पे. इस कार्डानो की ब्लॉकचेन के जो एसेट्स हैं वो इस पर लिस्ट हो सकते हैं, उसको स्वैप कर सकते हैं आप. और इसकी जो है अभी IEO चल रही है, इनिशियल ऑफरिंग चल रही हैं इसकी. अभी पब्लिक ऑफर्स में नहीं गया है ये. आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट का एड्रेस ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर. ये वेबसाइट इनकी do.exchange. इस पे जाके अगर आप पार्टिसिपेट नाउ का क्लिक करेंगे इसका लिंक, तो आप जो एक्सचेंज है X मार्केट्स, वहाँ चले जाएंगे और उनके उस पेज पे जहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं. इस वक्त आप इसको बिटकॉइन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, अपना बिटकॉइन इसमें ट्रांसफ़र करके इस एक्सचेंज में.
और 15 सेंट का इस वक्त इन्होंने प्राइस रखी है इसकी, इसको जो बेच रहे हैं। लेकिन ये भी इसकी जाहिर सी मार्केट प्राइस नहीं है। जब मार्केट में आएगा तो फिर इसकी प्राइस का अंदाज़ा होगा कितने का ये जाता है। दैट वुड बी थिंग टू सी। मैं उसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये, एडेक्स की तरह से भी सेंटों में ही होगा। क्योंकि आने के बाद, क्योंकि एडेक्स के भी जो है वो 100 मिलियन कॉइन्स हैं, इसके भी 140 मिलियन कॉइन्स हैं। तो टोटल मार्केट सप्लाई की तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के रेंज में है एडेक्स की। लेकिन असल बात ये कि प्रोजेक्ट को देखना होगा कि प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, एडेक्स के मुकाबले में कितना ज़्यादा अपने आप को ये लोग जो है तेज़ी के साथ लेके आते हैं और मार्केट करते हैं, कितने अच्छे फीचर्स हैं इसके, उन तमाम चीज़ों के ऊपर। आई स्टिल बिलीव कि ADAX इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो काफ़ी आगे आ चुके हैं और मार्केट में उनकी काफ़ी एक साख बन चुकी है ADAX की। और वो भी अभी स्टिल अवेलेबल सिर्फ एक्स मार्केट्स पे हैं, लेकिन उनके CEO ने इंडिया दिया है इस चीज़ का, और दूसरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल हो जाएगा ADAX बहुत जल्दी। जबकि ये Doex जो है सिर्फ अभी अभी इवन एक्स मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ इस पेज के थ्रू मैंने जैसे आपको दिखाया है कि इस पेज पे कैसे आना है, यहाँ पर अवेलेबल है सिर्फ। ये अभी इसकी इनिशियल ऑफरिंग्स हैं इस कॉइन्स की। अभी ये 2 घंटे तक और चलेगा मज़ीद, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये भी। और फिर उसके बाद जब मार्केट में आता है तो कितने का आता है वी डोंट नो। अभी राइट नाउ ये 15 सेंट का बेच रहे हैं इसको। तो एक ये अच्छा कॉइन, इनकी जो वेबसाइट पर अगर आप देखें तो काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, अच्छी वेबसाइट लग रही है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपने टोकनॉमिक्स को, काफ़ी किस तरीके से उन्होंने ब्रेकआउट किया। रोड मैप्स इनके सारे नज़र आ रहे हैं हमें कि काफ़ी 2022 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें डेवलपमेंट इन्होंने रखी है, जो कि एक अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा वॉलेट्स की डेवलपमेंट और डिफरेंट पार्टनरशिप्स जो हैं वो ऑन बोर्डिंग आएंगी, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट सामने नज़र आ रहा है। मल्टीपल एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत कॉमन है, और अभी कार्डानो क्योंकि बहुत ही इन्फेंसी लेवल पे है, अभी बिल्कुल बेबी है, उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं बस इन लाइन हैं आने के लिए। और जॉन हॉपकिंसन ने जो अभी रिसेंट अपना इंटरव्यू दिया है, वो बेसिकली लाइव स्ट्रीम किया, उसमें बहुत 2022 की जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें आगे सामने रखी लोगों के, किस तरीके से वो आएंगी। इसकी भी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एडवाइज़र्स की टीम, पार्टनरशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मीडिया प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी इसकी। तो और उसके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो लाइव हैं। उसमें मैंने जैसे बताया कि मैंने इनका देखा ट्विटर अकाउंट, तो उस पर काउंटडाउन चल रहा है कंटिन्यूसली, क्या इनका जो IEO है वो कितने आवर्स रह गए हैं, कितने आवर्स रह गए हैं, वो सब उसमें काउंटडाउन चल रहा है इनका। तो ये लॉन्च पैड पर अवेलेबल है एक्स मार्केट्स के वक्त इसके कॉइन्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुछ इसको उठा सकते हैं, अभी मून बैग अपना भर सकते हैं उसमें इफ़ यू लाइक। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट दैट्स व्हाट इट इज़। ये तो हो गया Doex। इसके अलावा जो मैं आपसे कल क्विकली आपसे बात की, उसको थोड़ा सा एलाबरेट करना चाहूँगा, पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। सो I am very bullish about ADAX right now. It is when yesterday we were talking about it was like 50 cent or some 58 cent or 55 cent somewhere there. Right now it's almost 70 cent, and it has crossed 73 cent earlier. But right now it's still sitting at 70 cents. So still it's a very good buy. All time when the markets were really coming up in September, October, I think it went up all the way to $2.30. So it still is way below its all-time high. But why I'm bullish so much on that? Just because ADAX is another decentralized exchange protocol on Cardano. And it's not just one thing that it is offering, like decentralized exchange, no, but it is offering a lot more than that. It is that's what the interview I was talking about I showed yesterday also quickly. But now we can see, because we have better internet connection and all that, so we can see that his CEO
came up for 13-14 minutes a video on the Christmas Eve, and he showed why in January 2022 ADAX will blast off. Uh, One thing he showed everybody is the interface of their DAX system, their swap system. So swap, and he showed how easy to swap coins between using their DAX system, ADAX system, um, and and beyond their decentralized exchange, he also announced that this system will be available for the test. It's already live, and a lot of private people and third-party companies are testing it. But it will be available on testnet on first week of January for the general public, so everybody can go and start using it and checking it on different test coins, swapping them, connect their wallets and see how it works. That is going to happen in first week of January. But on January 30th, 2022, they are launching it into mainnet. That is another big thing, that they will be launching it on January 30th, and the system will be live, and you can start using it. Beyond their decentralized exchange, he also announced something really cool, which is this. He announced that they are also launching their centralized exchange, which is very interesting because every decentralized software or exchanges don't have that. They only deal with either with decentralized exchanges, or the centralized exchanges only have their centralized exchanges. But this one is going to be very interesting, that, and on top of it, that they are going to launch their centralized exchange. On top of that, that centralized exchange will only cater Cardano projects. That is new, because no other centralized exchange can say that we are only going to deal with certain blockchain. No, but this one, he is claiming that they will only deal with the projects that they are on Cardano blockchain. So that is another very interesting thing, and he showed the interface and everything. So it's already in works. It is also a coming up thing, which is very nice. And he also announced not only his own centralized exchange that ADAX will be available, but he also announced that they are working with other centralized exchanges. He didn't name any, but I would assume that at least something like KuCoin or some exchanges, those exchanges will be there where he's going to list those centralized exchanges this coin ADAX. And then towards the end, he also mentioned that they are partnering with Wire Finance about creating their NFT vaults. So he's also jumping in to NFTs. So this is the only project ADAX, as far as I know, which is involving in so many things in one platform, that can raise ADAX coins values tremendously. And just to put things in prospect, it has only 100 million coins, and only 52 million coins are in circulating supply, which is very common. If they already thought about it in the beginning that they are going to deal in the NFTs, so they are reserving those extra coins for their NFTs releases. So so it's very, very nice. And just to put into prospect, there are 52 million coins in circulating supply, as compared to 116 million coins of Ethereum. So think about it, that if they start introducing such things in January only, this next month, the prices will go skyrocket. I can assume that. I mean, the price has already been like more than double where they are right now, 3 times actually. It was $2.24 or something when there was no project launched, but now we have projects that are coming in within a month. So we can assume that how quickly these projects these prices can go up for ADAX.
they are launching their own launch pad as well. You can all the links are there in this YouTube video, or right above you can see the tweet also. So you can check this out on your own as well, if you like. So that's what my take on ADAX. That's coming really hot right now. A lot of people start talking about it. I have been talking about it from months ago, when it was, you know, was nothing. Nobody was knowing about it. That's what my specialty is. That's what I always strive for. Like, just I introduce you Doex before this. I always look for those coins which has good potential. Very small investment, you can earn big. That's where I'm going for forward. And if you like those kind of content, please subscribe and like my videos, subscribe my channel, and distribute within your friends. I am trying to do these special videos for in both in English and Urdu, so everybody can benefit it. That's it for my English viewers. Thank you very much for watching. Now I will close this live stream with my Urdu audience by translating this into Urdu. So मेरे उर्दू ऑडियंस, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि नया कॉइन आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया मैंने, और आपको याद हो जब जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं कि मैं काफ़ी महीनों पहले से जो है एडेक्स के बारे में आप लोगों को बताता आया हूँ मैं, कि कार्डानो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर आएगा ये। और जैसे कि अभी मैंने इंग्लिश में बताया कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जनवरी में लॉन्च होने जा रहे हैं। इसका जो टेस्ट नेट है वो जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च होने जा रहा है। जनवरी के एंड में 30 जनवरी को इसका मेन नेट लॉन्च होने जा रहा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, एडेक्स का। इसके अलावा सेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहे हैं अपना ये, जो कि सिर्फ कार्डानो के प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करेगा। उसके अलावा जो है वो जो है NFT मार्केट प्लेस लेके आ रहे हैं, NFT वॉल्ट इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने, और वो लेके आ रहे हैं। तो और उनकी जो कॉइन्स की सप्लाई है वो बहुत कम है। वो अगर कंपेयर करें उसको आप इथीरियम के साथ, इथीरियम की 116 मिलियन कॉइन्स हैं उसके, और इसके सिर्फ जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 52 मिलियन कॉइन्स की है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए अगर इस तरह के कॉइन जो कि जिसके मैंने एडेक्स को आपको शुरू में इंट्रोड्यूस कराया, अभी ये डूएक्स को मैंने कराया आपको इंट्रोड्यूस, तो इस तरह के कंटेंट्स अगर आपको बेनिफिट दे सकते हैं या दे रहे हैं ऑलरेडी, और आप इसमें पैसे बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स में इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके इस चैनल की, और मैं आपके सामने इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स रेगुलरली लेके आता रहूँ। मार्केट वॉच भी हम रोज़ाना देखते हैं, इस तरह की कॉइन्स के बारे में बात भी करते हैं, इनके प्राइस एक्शन के बारे में हम देखते हैं कि क्या किस तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यही मैं कहूँगा आप लोगों से। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बेनिफिट हो, और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये कि आप कन्विंस हो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की नहीं है, और फ़ायदा उठाएं उनसे आप। नेक्स्ट वीडियो तक की नहीं इजाज़त। खुदा हाफिज़।